Just wait 2 to 3 minutes, okay? Then we will start the second. I think now screen is visible, whiteboard. Whiteboard is visible or Yes, not? sir. Yes, sir. Okay. So again, I am sharing that things that complement form. For complement, there is two complement, one complement and two complement. Okay, here. So for the case of one complement, suppose here complement method. So first one is one's complement. 1 minute. One's complement, and the second one is two's complement. Suppose we have one binary number. So suppose here it is given 0 0 1 0 1 1 triple 0 1 0. This is given. Okay. So for first complement, for the case of first complement, you just consider where you are watching 0. In that position, you just put 1, and where you are watching 1, in that position you just put 0. So this is the reversible. So if we have the last digit here is 0, so in that position we are putting 1. The second one, this is 1, so it is 0. Again, this is 1 1 1. This is 0 0 1 0 1 1. This is the first complement of this binary number. It is clear or not? We just take Yes, the sir. reverse. Yes, sir. In binary, there is only 0 and 1. So where we are getting 1, in that position we are taking 0, and where we are getting 0, in that position we are taking 1. Okay, so this is the first complement. So to get the second complement, we just add 1 with first complement. Okay, so second complement equals to first complement plus 1. So this is our actual binary. This is actual number, and this is the first complement. So to get the second complements, now we are adding 1 with this first complement.
So this is 1 plus 1 0, carry 1. So this is 0 plus 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1. This is the second complement. It is clear, or you have any doubt? It is clear? No sir, clear है, No. clear है sir. शायद किसी का आवाज है नो. आपको प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं. क्लियर है सर, वो बोल रहे थे कि Okay. क्लियर So नहीं है if तब बोले थे. so okay, so if it is clear, so when he will get any number, any signed number, and in that question it is given that write the uh, given suppose it is given that there is a signed binary number, and it is you will represent it in the forms of first complement or in second complement. Okay, so in that case, here for the case of syntax of first complement. Okay, so for the case of syntax, this is signed bit, and this is the first complement of actual binary. This is for first complement representation. Okay, for the case of second complement form, so in that case again this is sign bit, and this is 2's complement of actual binary. Okay, so now I am giving one problem. Suppose I am giving one number, that is 0 1 1 0 1. It is given. Okay, we want, first one is that signed magnitude form. Second one, first complement form, and third one, is complement form. So you, at this moment you already know how we will calculate or how we will get the sign magnitude from first complement and second complement form. Okay, so do it first.
I am getting responses. So I am requesting you that please write your value in decimal. Okay. I think I am getting the binary value. Okay, no issue. But you just convert your value into decimal. I am getting different answers. So now I am doing by myself. Okay. So it is given that is 0, 1, 1, 0, 1. So for the sign magnitude, this is the sign bit. So 0 means 1 or Plus. sorry, plus or minus. Plus. 0 means plus. And this is 1101. 1101 means 13. 13. So the sign magnitude form is plus 13. Okay. Next one is first complement. First complement, that is 0, 1, 1, 0, 1. So this is the actual. So first complement is 0, 1, 0, 0, 1. So the value is what? In decimal? -2. -2. How you are getting -2? नो सर, वो मैं उसका बता रहा था, माइनस और प्लस का जो सिंबल बोल रहे थे उसका। क्या होगा आंसर? This is 1, 0, 0, 1, 0 for first complement. For second complement, it is +1. So it is 1, 1, 0, 0, 1. This is second complement. So now one thing. Here one thing, that is here the left, this digit should be calculated as a sign bit or sign bit. So if in this case 1 and 1, so the first complements we got, that is 1, 0, 0, 1, 0. So this is 1. So this is, if we are getting the minus, so in that case 1 means minus or plus? माइनस। Huh? Minus Minus, and 0, 0, 1, 0 means 2. 2. and this is 1, 0, 0, 1, 1. So this is 1. 1 means Minus. minus, and 1 or 0 means minus. It is clear? Yes, sir. Okay. So next, I am giving another problem. Suppose it is given 1, 1,
0 1 0 1 0. Please tell me the sign magnitude from 2s complement and 1s. It is not minus 52. First, you tell me the sign magnitude form. Uttam, first you tell me the sign magnitude value. The value of this binary number, the sign magnitude form is minus 42. How it is coming? Here, this is 1, so it is, sorry, 1 1 0 1 0 1. So this is 1, so this is minus. Sorry. And this is 1 0 1 0 1 0. So if we calculate 1 0 1 0 1 0, in that case we will get 42. We will get 42. This is 5 to the power 5 means 32. To the power 8 means, to the power 3 means 8. So 32 plus 8 to the power 1 means 2. 42.
Anjali, 1 means minus. So you just hear the value. So I think this is minus 21 and minus 22. Anjali? No, sir. Sir, when 1 is complement form, 1 is will be changed to 0. Okay. Just 1 minute. Yeah, I think you are right. 0, 1, 0, 1, 0. So the first complement is 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Yeah, na? The Yes, second sir. one, 1 and 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. So if we consider these two, this is for plus and this is for 0, 1, 2, 3, 4. 2 to the power 4 means 16 plus 4. 16 plus 4 plus 1. 1. Yeah, and this is 16 plus 4 plus 2, 22. Okay, is clear now? Yes, sir. Sir, in Yes, previous sir. question, Hmm. sir, in Hmm. previous question, we got one first complement form as -2 and second as -3. But logically, -2 plus 1 should be -1. प्रॉब्लम क्या था बोलो? सर, इससे पहले वाला प्रॉब्लम बोलो प्रॉब्लम क्या था? हम तो भूल गए. 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1. 0 1 ये था गिवन नंबर. यस सर. तो 0 means plus. So Plus. 1 1 0 1 means 13. This is sign Yes, sir. magnitude. This is sign magnitude. यस सर. उसका क्या बोले थे हम? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट. सर, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कैलकुलेट करने पे -2 आएगा. ओके ओके हम कर रहे हैं. गलती हो सकता है, हम देख रहे. 0 1 0 0 1. ठीक है. यस सर. ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट. सेकंड कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0 1. ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. यस सर. तो बोलो अभी क्या है बोलो. सर, क्वेश्चन ये है कि जब इसका बाय फॉर्म देखेंगे तो ये -2 है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड है -3. तो इसमें लॉजिक नहीं देखते हैं. जैसे लॉजिकली तो -2 + 1 -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ -2. -3 हाँ है. तुम जो बोल रहे हैं यहाँ पर 1 0 0 1 0 ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 1 1. हाँ इस बार बोलो. सर, क्वेश्चन ये है ना कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर -2 आएगा और सेकंड वाला -3. 1 मतलब माइनस. माइनस. माइनस ये मतलब आएगा. सर मतलब वो सर लॉजिकली आप अगर कीजिएगा ना तो सर वो -1 करके आ रहा है मतलब सर ऐसे. बट हम लोग जैसे आप बताए तो उस टाइप से सर चेंज हो जा रहा है, वो मतलब है. अच्छा. सर, ये -3 हाँ मतलब -3. ये है कि इस वाले केस में लॉजिक भी काम कर रहा है और पहले वाले केस में लॉजिक नहीं काम कर रहा है, वो पूछ रहा है बस. पहले वाला मतलब पहले वाला मतलब -2 + 1
-3 आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी क्या बोल रहे हैं? इसमें तो -2 -3 हाँ हाँ यस सर, -2 -3 आ रहा है ना। हम्म अगर लॉजिकली देखें तो -2 + 1 -1 होता है ना, हम्म लेकिन यहाँ -3 है। तो वही पूछना था कि यहाँ लॉजिक नहीं लगता है, बस ये मतलब इस फॉर्म पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ वही। ठीक है। ओके सो नाउ आई एम गिविंग वन सर वो क्वेश्चन को आप सर एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए सर। कौन सा? सर इससे जो प्रीवियस जो आप बताए थे इससे पहले वाला एक बार सबसे फिर से आप बताइए ना, तो उसमें आपको हम डाउट से बता दे रहे हैं। ओके सॉरी। क्या दिए थे बोलो? प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलो, मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन क्या दिए थे पिछले वाला? हेलो हेलो यस सर। प्रॉब्लम बोलो पिछले वाला को। जीरो वन वन जीरो वन, ये था 0 नंबर। 1 1 0 1 ये गिवन नंबर इसी था। का। हाँ। बोल रहे हो तो 0 मतलब 0 के लिए प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। सो प्लस ये 4 डिजिट के लिए 8 4 2 1 से 13। सो दिस इज साइन मैग्नीट्यूड। ओके यस सर। उसके बाद गिवन नंबर था 0 1 1 0 1। सो कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दिस इज 0 1 0 0 1 and second complement this is add with this add 1 with this first complement, so it is 1, this is 1 0 0 1. So if this bit is for sign bit, so 1 means minus both cases. So this is 0 0 1 0 means 2 -2. and this is 3. But if you write 1 0 0 1 0 and 1 0 0 1 0, it is also right. Okay. Is there any doubt? Anjali, it is clear. सर उसको सेम कर दिए। मतलब वो जो वो अभी किए 10010 और उसके नीचे लिखे 10011। तो सेम होता है 100 10 एक तो और 2 हो गया, एक 3 हुआ ना सर, हाँ तो वो सेम तो नहीं होगा। अंजलि बोल रही थी ना सर कि जैसे ये जो बाइनरी में है ना 10010 और उसको 100 +1 किए उसके बाद 100 हाँ फर्स्ट सर कॉम्प्लीमेंट। सर जैसे ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जो है ना हाँ उसको उसने लॉजिकली साइन में बदल के -2 करके उसके बाद +1 शायद किया, तब वो बोल रही थी। अच्छा, ये साइन मैग्नीट्यूड में करके उसके साथ +1 करके फिर ले आ रहा है। शायद यही वो बोलना चाह रही होगी। शायद ठीक है। Next, I am giving one formula, sorry, one problem that is represent -20 in 8-bit 2's complement form
You just try first. After that, I will show you. One thing, first of all, there is only 7 minutes left for this session. So I am requesting all the participants to put your name in the chat box for the second session. सर इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट 4 आएगा। सॉरी, बाइनरी में बोलो। बाइनरी में 0000100 000 100 ना। Okay, let's see. So it is given 28. First, it is given 28. So 28 in binary, it is 11100. This is for 20 bit. We need 5 bits, but
In question, it is given that your answer should be in 8-bit. Okay, and we will get 1 bit from sign bit. Okay, so this is 5-bit, and we need 3-bit also to for 8-bit. So and 1 bit we are getting from sign bit, so we need actually 2 bits. Okay, so if we are putting here 0 0, so this is 3-bit and 1, so this is 7-bit, and 1 bit we are getting, or we will get from sign bit. Okay, so first, this is the representation of 28 only. Okay, so first complement is 1 1 0 0 0 1 1. This is first complement. Second complement is this is 1 plus 1 0, 1 plus 1 plus 1 1, carry 1 1. Sorry, just 1 minute. This is plus 1 1 plus 1 0, carry 1 1 plus 1 0, carry 1. This is 1, this is 0 0, this is 1 and 1. Okay, so this is the second complement of 28. Now this is 3 3 and 1, 7-bit, and for minus we will put here 1. So minus 28 equals to 1 1 1 0 0 1 0 0. This is the answer. And you can see here, this is 3 3 6 and 2 8 bits in the form of choose complement. It is clear? सर कंफ्यूजन है इसमें भी, बट टाइम नहीं बोलो। बचा हुआ है। बोलो कौन सा कंफ्यूजन है, बोलो। सर पर तो कि आप बोले हैं -28 को सेकंड कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए 8 बिट, बट आप 28 को मतलब यहाँ पे माइनस बोले हैं, तो यहाँ पे हम पहले -28 को हम बाइनरी में क्यों नहीं कन्वर्ट किए? 28